Hello. Till date, we have discussed a few very important questions of data science and machine learning, basically framed from the Kamber data mining book. Without delay, let's start today's session. Let me share the screen for you. Okay. So last questions we have discussed, just a minute, is about why EM is better than in imputation. ठीक है तो ये हमने डिस्कस कर लिया था expectation maximization is better in compared to mean imputation because it iteratively estimates machine values and updates the parameters preserving the structures and relationship in the data set. ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं व्हाट इज डेटा स्मूथिंग इंपॉर्टेंट है ठीक है तो डेटा स्मूथिंग क्या है In data preprocessing, real-world datasets often contain noise. And noise क्या होता है? Irregular values, errors in measurement, unexpected extreme values. Okay, remember, this is very important. Noise means irregular values, errors in measurement, unexpected extreme values. Now, to handle this, we use a technique known as data smoothing, which helps to make data cleaner and more meaningful. Data smoothing is a process of reducing noise in data by replacing original values with representative values from a group that we call as a bin. Okay, तो इस प्रोसेस में हम जो नॉइस है जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको हम एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं और ये जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है हम ग्रुप से लाते हैं जिसको हम बोलते हैं bin smoothing. Okay, in bin smoothing data is divided into small groups called bins. जैसे आप लोगों को पता होगा हिस्टोग्राम में भी हम bins यूज करते हैं ऐसे ही यहाँ पे डेटा को हम स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करके हर एक ग्रुप को हम बोलते हैं bins and the values inside each bin are replaced with a representative value. Now types of bin smoothing. ये अलग अलग वैल्यू से जो रिप्लेस करेंगे वो उससे डिफरेंट टाइप बन जाएगा जैसे कि स्मूथिंग बाय बीन median replace all values in a bin with the median value of that bin. Median is used because it is less affected by extreme values. हम जानते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज के कारण मीन अफेक्टेड होता है राइट बट मीडियम तो मिडिल वाला वैल्यू है वो इफेक्ट नहीं होता है तो स्मूथिंग बाय मीन मीडियम में हम जो सारे वैल्यूज हैं उसको मीडियन वैल्यू से हम रिप्लेस कर देते हैं जैसे आप मान लो 10 12 90 40 तो मीडियम वैल्यू के लिए सबसे पहला स्टार्ट प्रोसेस होगा यू हैव टू सॉर्ट द डाटा 10 12 14 19 अब इसमें से मीडियन होगा 14 राइट आप ये सारे वैल्यू को हमने क्या कर दिया इस 14 से रिप्लेस कर दिया करेक्ट जो सारे वैल्यू अभी क्या हो गया आपका 14 14 हो गया ना यहाँ पे जो एक्सट्रीम वैल्यूज था 90 ये नॉइस टाइप का था क्योंकि ये थोड़ा अलग था बाकी सबसे बहुत ही अलग था डिफरेंट था एक्सट्रीम था अब इसको हमने रिप्लेस कर दिया ठीक है सो एक्सट्रीम वैल्यू 90 इज रिमूव्ड इफेक्टिवली ये हो गया आपका स्मूथिंग बाय बीन मीडियन देन स्मूथिंग बाय बीन बाउंड्रीज तो ये क्या होता है replace values with the closest boundary value of the bin. Boundaries are the minimum and maximum values in the bin. तो अब हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे एक क्लोजेस्ट बाउंड्री वैल्यू से बाउंड्री तो हम जानते हैं मिनिमम और मैक्सिमम को बोला जाता है जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल लो 10 12 90 40 जो हमने अभी लिया था आप इसका जो बिन हमने लिया सपोज पहला वाला बिन 10 12 14 सेकेंड वाला बिन 90 अब उसका बाउंड्री हम देखेंगे तो 10 एक हो गया बाउंड्री एंड
14 हो गया एक बाउंड्री किसके लिए? ये जो बीन वन है, बीन वन के लिए आपका क्या हो गया? बाउंड्री ये हो गया, राइट। बीन वन का तो समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है 10, 12, 14, इसको क्लोजेस्ट बाउंड्री यहाँ पे अगर 5 होता वैल्यूज तो हम ऑब्वियसली 10 को लोएस्ट बाउंड्री से रिप्लेस करते। तो इसलिए 10 इज 10, अभी यहाँ पे 3 है, कोई बात नहीं। 12 तो मिडिल में आ गया, या तो इसको तुम 10 से कर सकते हो या तो 14 से कर सकते हो, और 14 तो 14 ही है। तो स्मूथ डेटा बिकम मोर स्टेबल एंड लेस नॉइजी। आ गया समझ में? तो सिंपल आइडिया है। बिन मीडियम में हमने क्या किया, बिन मीडियम में हमने वैल्यू को मीडियन के साथ रिप्लेस किया, और बिन बाउंड्रीज में हम नियरेस्ट बाउंड्री से रिप्लेस कर दिए। अब क्यों सही है? Why data smoothing is needed? Because it removes noise and it improves data quality. It helps in better pattern detection and it is useful before machine learning model. ये सारे मॉडल, ये जो टेक्निक हैं, ये हम अप्लाई करते हैं बिफोर एमएल एल्गोरिथम बीइंग अप्लाइड। क्योंकि डेटा अगर आपका इनपुट डेटा अगर सही रहेगा, आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आउटपुट ऐसे बोल सकते हो आपके एमएल एल्गोरिथम एफिशिएंटली परफॉर्म होगा। सो दैट्स व्हाई डेटा स्मूथिंग इज नीडेड। रियल लाइफ एग्जांपल आप एक ले लेते हैं, से टेम्परेचर रीडिंग्स में फ्लक्चुएट रैंडमली, ये तो हम जानते हैं। कुछ रीडिंग ले लो आप लोग, 30, 31, 29, 80। यहाँ पे 80 क्या है? ऑब्वियसली एक फ्लक्चुएटेड वैल्यू जो कि नॉइस है, राइट। सो स्मूथिंग क्या करेगा, ये 80 को हटा देगा। अगर मीडियन से लोगे तब भी ये हट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा आपका 30 से। और आप अगर इससे भी ले रहे हो तब भी चेंज हो जाएगा, बट ये आई विल सजेस्ट मीडियन भी मेथड को आपको यूज करना चाहिए। ठीक है। एडवांटेज वी गॉट इट, इट रिड्यूसेस नॉइस, इट improves data consistency, it makes trends clear and useful in pre-processing step. Limitation ये है कि may remove useful extreme values का, हम नॉइस हटाने के चक्कर में क्या हो सकते हैं, हम जो यूजफुल एक्सट्रीम वैल्यूज हो सकते हैं वो भी हट जाएगा। ठीक है। It can oversimplify the data and it may distort original distribution. So data smoothing is an important preprocessing technique that is used to reduce noise in dataset. Bin smoothing methods like bin median or bin boundary replacement help in making data more stable and meaningful for analysis and machine learning tasks. So data smoothing समझ में आ गया, bin median and bin boundary ये भी आपको समझ में आ गया। Let's come to the next one. Next one is principal component analysis, one of the very important method. In real world dataset, we often deal with many features, high dimensional, like age, height, weight, income, marks, और बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, राइट। बट रियल लाइफ में इतने सारे फीचर्स को हमें जरूरत नहीं पड़ते हैं कुछ कैलकुलेशन या कुछ प्रेडिक्शन के लिए। इसमें से कुछ ही जो इम्पोर्टेंट है उसको हमें जरूरत पड़ सकते हैं, राइट। बिकॉज हाई डायमेंशनल डाटा कैन स्लो डाउन द मशीन लर्निंग मॉडल्स, it can contain redundant or correlated features, it make the visualization difficult. To solve this we use a technique that is known as principal component analysis. Now PCA क्या होता है? Dimensionality reduction technique है ये तो, you know that, right? This is a dimensionality reduction technique that transform the original variables into a smaller set of new variables we call principal components. And these components capture maximum important information, right? Then are uncorrelated with each other. क्योंकि आप वो दो फीचर को लेके साथ में लेके कोई फायदा नहीं जो बहुत ही ज्यादा कोरिलेटेड है, दोनों एक ही जैसा है, है। तो हमें ऐसा लेना चाहिए जो अलग अलग है, दोनों को ही परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ेगी, दोनों को ही हमें इंक्लूड करना पड़ेगा प्रेडिक्शन के लिए, तो ऐसा फीचर्स लेना चाहिए।
which are uncorrelated. Okay. Now, main idea क्या है? PCA tries to find directions where data varies the most, right? And maximize W to the T X. ठीक है? अब X ओरिजिनल रहता है, W is the direction vector, इसको हम बोलते हैं principal component, and W to the T X is the projected data. PCA keeps direction with the highest variance, most information, right? Now, step by step क्या procedure है? First, you have to standardize the data, right? You have to standardize the data, bring all features to same scale. Example, like you convert all variables to mean 0 and variance 1. This is important because PCA is very sensitive to scale. The second step is that you have to compute the covariance matrix, right? You have to measure the relationship between the variables, and it shows how features vary together. So that is covariance, right? Then third step, you have to compute the eigenvector and eigenvalues. Eigenvectors and eigenvalues you have to compute. Eigenvectors implies directions of maximum variance, and eigenvalues amounts of variance in that direction. तो इसलिए हम एजेंट वेक्टर्स और एजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं. एजेंट वेक्टर हमें मैक्सिमम मैक्सिमम वेरिएंस का डायरेक्शन बताते हैं. एजेंट वैल्यूज हमें कितना वेरिएंस आया है वो दिखाते हैं उस डायरेक्शन में. सो लार्जर एजेंट वैल्यू मीन्स मोर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट. ये इम्पोर्टेंट लाइन है. लार्जर एजेंट वैल्यू मीन्स मोर इम्पोर्टेंट component. Then we have to select the principal component, and for that what we do, sort agent values in descending order. Choose the top k and gen vectors, क्योंकि agent value ज़्यादा बड़ा होगा तो वो important माना जाता है. So this become the new feature space. Then step 5 is the transform the data, project original data onto the new components, reduce the. क्या होगा इससे? क्या होगा जो हमारे इतने सारे n था, n में से सिर्फ हमने k लिया. अब क्या होगा इससे? डायमेंशन रिड्यूस होगा, लेस नॉइस एंड मोर मीनिंगफुल स्ट्रक्चर. सिंपल अगर इसका फ्लो देखेंगे हम, रॉ डेटा स्टैंडर्डाइज किया, एक स्केल में लाया, कोवेरिएंस निकाला हमने, एजेंट वैल्यूज एंड एजेंट वेक्टर्स कैलकुलेट किया, उसके बाद प्रिंसिपल कंपोनेंट सिलेक्ट किया, और यही प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के ऊपर हमने वैल्यूज को प्रोजेक्ट कर लिया. ठीक है. एक रियल लाइफ सिचुएशन का एग्जांपल ले सकते हो. सपोज वी हैव स्टूडेंट डेटा, मैथ्स मार्क्स, फिजिक्स मार्क्स एंड केमिस्ट्री मार्क्स. दिस आर वेरी हाईली कोरिलेटेड सब्जेक्ट्स. सो पीसीए क्या करेगा? पीसीए विल कंबाइन देम इनटू अ सिंगल और टू कंपोनेंट्स लाइक साइंस परफॉर्मेंस स्कोर. अल्टीमेटली बात तो एक ही हो जाएगा. ठीक है. अगर इसमें आपका आ जाता इंग्लिश, social science, then that can be considered as different. But PCM, they can be considered as a science subject, right? तो PCA क्या करेगा? इनको combine कर देगा. अगर एप्लीकेशन देखेंगे तो इमेज कंप्रेशन में हम यूज करते हैं. इन इमेज प्रोसेसिंग, इमेज images contain thousands of pixels, that is features. Many pixels are correlated, right? So PCA will reduce the number of pixels. It keeps important structures and it compresses the image without losing mass quality. ये जो आपका unique features रहेगा, that will be kept. Otherwise, the correlated one will be combined. So dimension will be reduced and the image will be compressed without losing some quality. विदाउट लॉस रिड्यूसिंग उस क्वालिटी तो डिग्रेड होगा, बट फिर भी मास क्वालिटी नहीं है डिग्रेड होगा, राइट. एडवांटेजेस क्या है? इट रिड्यूसेस द डायमेंशनलिटी, इट रिमूव्स द रिडंडेंट फीचर्स, it improves the model performance, and it helps the visualization, right? So these are the advantages of principal component analysis. Now limitation kya hai? Because it is very hard to interpret the new components and it may be sensitive to the scaling. Sensitive to the scaling is very, very important that you have to take care. Then also it assumes a linear relationship only. So these three are the limitations of the PCA.
PC does not remove information randomly. It removes less important variation. It keeps maximum variance direction. ठीक है, समझ में आ गया पीसीए कैसे काम करते हैं और इसका बेनिफिट एंड इसका थोड़ा challenges क्या है? You got it right. So this is a very powerful dimension reduction technique that transform high dimensional data into fewer meaningful components by maximizing the variance. Right? Higher agent values means better component. Right? It simplifies the data while preserving the essential information, making it widely used in machine learning and image compression. ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इसको, तो पीछे बहुत important topic. I hope you got it. So let's meet again in the next class. For today, for this class, this is sufficient. Thank you.